Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started with infectious disease of the oral and maxillofacial region, in which we have started with oral tuberculosis and scrofula. We have seen that it is secondary to the primary or active pulmonary TB, and it has the oral ulcer is painful, ragged ulcer, infected ulcer, and it is mainly seen on the posterior aspect of oral tongue, pharyngeal tongue or palate. Okay, let's start. So we have dealt with till the diagnostic workup we have dealt. Now we'll be seeing further. Because oral TB is secondary to pulmonary TB, a chest radiograph should be taken. The focus of dormant but viable organism in the lung has been called the Simon focus. सो द फोकस ऑफ डॉर्मेंट बट वायबल ऑर्गेनिज्म, तो जो डॉर्मेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लंग में होते हैं उनका फोकाई उसको बोलते हैं साइमन फोकस. व्हेन कैल्सिफाइड एंड अपीरेंट ऑन अ चेस्ट रेडियोग्राफ इट हैज़ बीन कॉल्ड गोन फोकस. तो जब तक डॉर्मेंट रहते हैं उनको साइमन फोकस बोलते हैं, एंड व्हेन इट बिकम कैल्सिफाइड एंड अपीरेंट इट इज़ नोन एज गोन फोकस इन लंग्स. If a chest radiograph is suggestive and or the oral lesion biopsy specimen shows granulomatous disease, sputum collection for acid fast staining and culture, preferably by transtracheal irrigation and aspiration is recommended. Scrofula cervical TB lymphadenitis may be due to Mycobacterium Scrofula2 as an independent cervical lymphadenitis. या तो independent cervical lymphadenitis होगा, या और it may be due to pulmonary TB from cuffed up sputum with either M. tuberculosis or M. scrofulatum draining into the cervical lymphatics through the oral mucosa. Patient will present with several smaller firm nodes that are freely movable. Cervical lymph node excision will diagnose and resolve the involved node, but the other cervical lymph node may be infected in earlier stage. Patient require the same systemic drug regimen as for oral or pulmonary TB. तो जो स्क्रोफ्यूला होता है दैट इज सर्वाइकल टीबी लिम्फेडेनाइटिस, उसमें भी सेम रेजिमेंट चलता है. नाउ कमिंग टू हिस्टोपैथोलॉजी, इट एपिटोमाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ सो कॉल्ड एपिथेलॉइड ग्रैन्युलोमा. Initially, organisms multiply freely and proliferation of neutrophils with necrosis. Then these are picked up by macrophages and proliferate intracellularly. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइकोबैक्टीरियम, वो माइक्रोफेजेस इनगल्फ कर लेते हैं क्योंकि उनका फैगोसाइटिक एक्टिविटी होता है, और वो ऑर्गेनिज्म दे proliferate intracellularly. Over 3 to 6 week period, cell mediated immunity develop. Then sensitized T cell secrete lymphokines which promote influx of macrophages into the area. तो और मैक्रोफेजेस आते हैं विच स्टिमुलेट देम टू मैच्योर मैक्रोफेजेस. जो ये सेंसिटाइज टी सेल होते हैं वो मैच्योर मैक्रोफेजेस स्टिमुलेट करते हैं. मैच्योर मैक्रोफेजेस में क्या होता है, उनका जो फैगोसाइटिक एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एंड इंक्रीज लाइसोजाइमल एंजाइम. कंटिन्यूड स्टिमुलेशन मैक्रोफेजेस इनटू एपिथेलियोइड सेल, और यही माइक्रोफेजेस कन्वर्ट इनटू एपिथेलियोइड सेल आफ्टर कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन. द फंक्शन ऑफ एपिथेलियोइड सेल is the digestion of organism and foreign material. Now multinucleated giant cells develop by the fusion of macrophages. Intentionally eosinophilic cytoplasm nuclei brimming the cell in the horseshoe arrangement, Langerhans cells. Langerhans giant cell. तो मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल होते हैं, पहले तो इस टाइप के होते हैं जिनमें यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म बहुत है, और जो न्यूक्लियाई है वो हॉर्सशू शेप अरेंजमेंट में रिम करते हैं सेल को, दैट आर कॉल्ड लैंगहैंस जाइंट सेल. एंड सम शो क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियाई
दे आर नोन एज फॉरेन बॉडी जाइंट सेल. तो दो तरह के दिखते हैं, दैट इज Langerhans cells and foreign body giant cell. So we'll be continuing this in next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.